Hi guys, भूले तो नहीं? This is Pushpa Banerjee and welcome back to Automania. Finally, I'm back after a month, and this last 1 month has been the most, you know, मतलब ऐसा एक महीना मैंने लाइफ में कभी नहीं काटा. बहुत लोगों को पता है, आप लोगों को, कि आई crashed a month back on 30th of March while I was going to Nepal. एंड वो राइड के बाद जो क्रैश हुआ था, द क्रैश वाज अनबिलीवेबली, सरवाइव नहीं कर सकते जो क्रैश हुआ था मेरा. एंड यस, आई एम अलाइव. द वीडियो का पर्पस यही है कि मैं आपको बताऊँ, आई नीड टू शेयर विथ माई पीपल, माई व्यूअर्स, एंड बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि क्या हुआ एंड व्हाट हैपेंड टू मी आफ्टर दैट. सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर दैट. एंड वीडियो अभी नहीं आ रही है बहुत दिनों से, सो माफ़ी फॉर दैट फर्स्ट. And I hope you understand कि क्यों नहीं आ रही है. And by the way, ignore that background noise, something कुछ हो रहा है बाहर शायद. Anyways, and yes, welcome back to this channel once again, and I want to talk to you about some things. I have to share these things with you. And शायद लास्ट एक महीने में मैंने कभी भी किसी के साथ सब शेयर नहीं किया ऐसे करके जो मैं आप लोगों से करने वाला हूँ. I know right now I'm sitting in front of a camera, that's it, but I know on the other side of the camera you are there watching this video. Yes, so let's get started. And first thing I would like to say that thank you for all the support, for all the best wishes, for all the messages, for all the calls which I've been getting from many of my subscribers, from my friends, families, about my health, my well-being. So thank you so much for all the support. And yes, क्या हुआ है, क्या हुआ था guys? I crashed, simple as that. There was an accident. And क्या हुआ क्रैश में, कैसे हुआ एक्सीडेंट, क्यों हुआ, let's not go into that, because there was no case lodged from my side against the person जिसने ये किया था, जिसने एक्चुअली आके मुझे मारा था. So I didn't do anything, so let's not talk about it. And right now मेरा वो मेंटल स्टेटस भी नहीं है कि मैं फिर से रिवाइंड करूँ अपने ब्रेन में कि क्या हुआ था, कि that was scary. All I can say is आज मैं जो आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ, this is a miracle. 99 times ये क्रैश सर्वाइवेबल नहीं होता. And the first credit goes to my mom, my dad, my family members, my supporters, my people जो मुझे प्यार करते हैं. इतना आप लोगों की दुआ के बिना ये नहीं हो पाता गाइस. Frankly speaking, मैं आज सामने नहीं बैठता. Second is my gears. मेरा जो हेलमेट था, जो फर्स्ट हिट मेरा हेलमेट में हुआ था, तो यहाँ पे एक दाग भी है, फर्स्ट हिट मेरा हेलमेट पे हुआ था. एंड दैट वाज अ ह्यूज हिट, ट्रस्ट मी. कोई नॉर्मल 2000 का हेलमेट अगर होता तो खत्म बात वहीं पे. तो यू नो व्हाट हेलमेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, बाय 2000 रुपीज. डू नॉट गो फॉर दोस हेलमेट्स. आई एम नॉट सेइंग एनी ब्रांड इज बैड, बट दिस काइंड ऑफ क्रैशेस को सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो हेलमेट, शेल टूट जाएगा फॉर श्योर. But my gears, next is my Rhinox pant. That saved my leg. Guys. आज अगर I am on my way to recovery is because उस दिन मैं Rhinox का पैंट पहना हुआ था. कोई भी 500, 1000, 1500 का जो नी गार्ड्स है वो मेरे पैर को नहीं बचा पाती. So kudos to Rhinox, my BBG jacket that helped me. There is not a single scratch in my body, guys. इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, इतना बड़ा रोल खाया मैं, ऑलमोस्ट 40-50 meters I was rolling on the road and I have no impact, no pain, nothing on my shoulders, on my chest. हाँ, हल्का सा यहाँ पे दर्द था मेरा for almost 20 days. यहाँ पे एक दर्द था and pain was huge. मतलब I had to go through an X-ray also, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ था शायद, but हाँ, that is okay now. I have no pain right now and back में भी no pains. So yes, only thing that got hit is my leg. And many of you might know PCL avulsion. So मेरा वही हुआ है, मेरा जो PCL लिगामेंट है वो उखड़ गया with some bone in it. बोन लेके उखड़ गया and I had to go through a PCL surgery, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी, जो कोलकाता में हुआ. तो ये भी लेके बहुत पॉलिटिक्स हुआ है, क्योंकि yes, I know डॉक्टर्स भगवान का नेक्स्ट रूप होता है, लेकिन पैसे तो पैसा होता है ना. Just for earning a few extra bucks, few doctors started giving me wrong suggestions, and they wanted to go for an open surgery, which is completely wrong. In my situation, that was completely wrong. And they were also saying that मेरा पैर stiff हो सकता है.
सो अपना साइड भी क्लियर कर रहे थे ये लोग. सो दिस हैपेंड, 2-3 डॉक्टर्स डिड दिस थिंग्स विथ मी. एंड देन भगवान की तरह मेरे लाइफ में आए डॉक्टर PK दत्ता. दिस डॉक्टर गेव मी द बेस्ट एडवाइस. सिंपल ही इसने बताया कि ये दुर्गापुर में नहीं होती है, आपको जाना पड़ेगा कोलकाता. एंड ही रेफर्ड मी टू कोलकाता एंड वहाँ पे आई गॉट माई सर्जरी डन एंड दैट वाज द बेस्ट सर्जरी पॉसिबल. मतलब perfectly guys done, no problems at all right now. और अभी तो फिजियोथेरेपी स्टिचेस कट गई है, फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गया है. सो यस, 1 month 31 days, so 32 days from the day of accident. I can't walk still, मैं चल नहीं पा रहा हूँ. so this is my new friend, say hi. so इसी के सहारे मैं चलता हूँ. and yes, that's the story of my situation of how I am doing now. Now the thing is what happened. See, crash I don't want to discuss for sure. But after the impact, first impact मुझे यहाँ पे लगा. Okay, and I was rolling in the air. All I could see was sky, road, sky and the road, sky and the road, and that kept on happening like it's the end of the world. And उस time मुझे लगा this is how I die. Next thing I'm seeing is a truck coming to run me over. And I can see that literally, and I smiled. Okay, goodbye. And all my life, my childhood, my family, my channel Automania, BlackBerry, everything came in my mind at a fraction of a second. I could see everything just. So I'm sure okay, this is done. But God had some other plans. That vehicle that was coming in the opposite direction did brake, and I was saved. But जिसने मारा था मुझे, he went off. I saw him running away like with his vehicle, and I don't think so. That was I don't think कि मैं कुछ केस वेस करना चाहता हूँ and all. Cops later on asked me, but I said I'm not interested. Anyways, so after the hit, when I got up, first of all I was searching for my body. मुझे लगा मैं मर गया, and then I took 2 deep breaths. Gosh, I'm alive. I am not dead, but I couldn't stand properly because of my right leg. तब मैं समझ में आ गया था कुछ हुआ है. I didn't know it was so serious, but कुछ हुआ है. So I could see my bike एक साइड में, एक जंगल के साइड में गिरा हुआ है, and it's on fire because the engine was smoking hot, right? So the engine was hot and the bike was on fire. It's almost पूरा जो oil है वो निकल गया था, and अंदर बहुत pressure रहता है ना, तो fumes आ रहा था, निकल रहा था, तो मुझे लगा it's on fire. So I jumped from the road to that area. आप देख सकते हो अभी जो पिक्चर आ रही है. तो वहाँ पे जाके मैं मतलब बाइक को उठाया, बाइक के सामान को मेनली, नॉट बाइक, सामान को निकाला, क्योंकि मेरे पास टॉप बॉक्स था, मेरे पास टैंक बैग था, मेरा टेल बैग था. I was loaded with cash, my laptops, my cameras, everything was there. Almost 5 लाख का सामान था मेरे पास. So फोन भी लगा हुआ था, फोन भी मेरा नेविगेशन के लिए लगा हुआ था, माउंटेड था. तो somehow I removed that. By this time other people came to help me, and सबने वो सब सामान निकाल के सीट से ऊपर चढ़ के रोड के साइड में रखा. तब मुझे फील हुआ कि something is seriously wrong with my leg because I couldn't keep my foot properly on the ground. And then came those few jokers who instead of helping, देखो पहले बात है बहुत लोग आए थे मेरे हेल्प करने के लिए. They helped me like anything, and I'm thankful to them, like people of Itahar. ये हुआ just after Itahar, just after Malda, before Raiganj in Itahar. There is a petrol station, Itahar petrol station, और Itahar hospital के सामने, just सामने ही हुआ है. मतलब there were people who helped me a lot. People from RCI, Riders Committee of India, I texted them. And many riders came over there and they did help me so much with so many things, and I thank them guys. Dil se thank you. Hirok bhaiya, BMW rider Hirok, like the number of contacts he gave me that day to get things done. So thank you brother for all the support. Orijit, the admin of Durgapur Sortlers, dude, you are a champ man. You whatever you did that day for me, thank you. All I can say is thank you guys, thank you. And yes, after that सामान को साइड में पेट्रोल स्टेशन में रख दिया, and by the time मेरा दूसरा राइडर था वो भी आ गया, and he was there continuously with my things and all because I had to be taken to hospital. मेरा बाइक तब भी वहीं पे गिरा हुआ है. This is the situation. And time है 12 AM, 12 noon को accident हुआ, and this is around about 12:30 or something that's happening. Then cops arrived and they trust me, the behavior was pathetic. The behavior from the cops were not good. It's like I'm a criminal.
एंड वहाँ पे जो मैं बोल रहा था, आई जस्ट स्टॉप्ड इट, कि कुछ लोग मुझे हेल्प कर रहे थे, कुछ लोग दे आर जस्ट शूटिंग अ वीडियो कि गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, GT 650 इस स्पीड में जा रहा था, उस स्पीड में जा रहा था, इसको ये मार दिया, व्हाट एवर नॉनसेंस दे कैन स्पीक, कुछ भी बोले जा रहा था. देयर वर सम गाइस एंड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, दिस इज व्हाट दे वर डूइंग विद मी. दिस इज अ गाय, यू कैन सी मेरे तरफ दिखा के, एज इफ आई एम अ क्रिमिनल, एज इफ मैंने कुछ रेप कर दिया, मैंने किसी को मोलेस्ट कर दिया, किसी को मर्डर कर दिया, एंड सम पीपल वर डूइंग ऑल दिस थिंग्स ओवर देयर. मतलब बट सम पीपल वर लिटरली सपोर्टिव, दे वर हेल्पिंग मी, एंड दोनों साइड ऑफ द स्टोरी है यहाँ पे. उसके बाद आई वाज टेकन टू हॉस्पिटल, द कॉप्स वेर बिहेवियर वाज पैथेटिक गाइस, ट्रस्ट मी, पैथेटिक. एंड देन वो हॉस्पिटल में जब गया, वो उससे भी और भी गया गुजरा था हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था. आई सेड दैट सर समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विथ माय लेग, प्लीज हैव अ लुक. दे सेड कुछ नहीं हुआ है, अगर टूट जाता ना तुम चल नहीं पाते, दर्द नहीं सह सकते. आई डोंट नो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट कि टूट जाता तो आई कैन बेयर दैट. अरे मैं सह रहा हूँ ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, सीरियसली गड़बड़ हुआ है ना, देखो एक्सरे करके दो ना एक. सो दे डिड नॉट डू दैट, द पेन किलर दे दिया, कुछ पानी तक नहीं दे रहा था बिकॉज आई हीट ऑन माय हेड. चलो आधा घंटा बैठ गए, उसके बाद तो दे दो. उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे पानी नहीं है. सो आई हैड टू गो आउट ऑफ द हॉस्पिटल माई सेल्फ विद दिस लेग, गिव अ टोटो ड्राइवर 100 rupees and said I asked them to bring a bottle of water and a packet of smoke for me. This is what I asked him, and he did that for me, and I thank him for that. But the doctors were pathetic, man, pathetic service, and I don't know what to be done, but this is the thing which I faced. उसके बाद डॉक्टर बोले you can go home, no problem, चल के चले जाओगे. Just imagine, this is the government doctors I'm talking about, and I took an toto by myself, all by myself, and मैं शाम और मैं गया एक्सीडेंट लोकेशन पे मैं गया. तब तक बाइक साइड से उठ के, इट वाज लाइंग ऑन बिसाइड द रोड, एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि व्हाट हैव आई डन. लाइक मैंने नहीं किया एक्चुअली, मतलब क्या हुआ मेरे साथ, व्हाट जस्ट हैपेंड टू मी. तब when I saw that bike, I went to the location, I saw that bike on the side of the road because the bike was pulled off from that area. And when I saw Blackberry, I was like, what the hell just happened to me? Us time, that was the moment I realized, yes, this happened. Before that, it was all like an automatic, it was happening automatically to me. I don't know what was happening. But that was the moment I realized, dude, I'm fucked. Because when I saw Blackberry in that condition, in that situation, I started, I couldn't take it, man. I could not take it. Means, I'm talking about my love. I don't have any, I'm not married, I'm a single guy. I love my work. All I do is I work, I earn money. And I'm from a very lower middle class family, guys. I'm not from a rich family background and all. To be frank, I earn money, I spend money on my bikes, on my rides, and save for my future. That's it. That is what I do. And I have my small family, my mom and my dad. That's it. So this is this is all I have. My mom, my dad, and my bike. So seeing her in that situation, I could not believe what just happened to me. I could not believe. I started crying. I broke down at that point. It was round about 3:30 I'm talking about. I completely couldn't believe, and that was the moment I tried to walk, and I could not walk anymore without support. And by this time my parents were calling, dude, where are you? Where did you reach? Did you have your lunch? I didn't say anything to my family. My mom, to my dad, I lied. Yes, I lied, guys, because I am almost 450 kilometers away from home. अगर पापा को पता चलता है, would have taken our car and reached the location. वो और भी dangerous हो जाती. So it was almost 12-13 hours away from my house. So it would have been very dangerous, and I cannot allow that. So मैंने झूठ बोला कि I'm fine. And there were many people from that area that came along. That was the जो मेरे साथ खड़े थे वहाँ पे, giving me moral support and everything. And I can't remember the names, guys. I'm sorry, I cannot remember the names of everyone who were there on the location helping me out. And I thank you guys, everybody, guys. दिल से दुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग लाइफ में आप लोगों को सब खुशियाँ मिले. और आप लोगों ने मेरे लिए जो किया था उस दिन, हिरोक भैया, उर्जीत, and all the other people around me, even the rider who were there with me, Devnath, जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है, thank you all, दिल से एकदम.
बट एक इंसिडेंट हुआ, एक आदमी आया एंड ही वाज लाइक बॉडी कहाँ है? अदर टू लाइक कौन सी बॉडी? नो, जो एक्सीडेंट हुआ, जो क्रैश हुआ, उसका बॉडी कहाँ पे है? So that guy, other guy just showed me that's the body. तो मुझे दिखाया, तो हम सिटिंग, he was like जिंदा है? मैंने बोला हाँ, फिट एंड फाइन। बोला क्या, कहाँ पे लगा? मेरे पास पैर में थोड़ा लगा है एंड और बाकी ठीक है सर, ठीक है, हाथ पैर चल रहा है मेरा, अदर लेग इज वर्किंग फाइन। बस ही इज लाइक हाउ, कैसे? मैंने बोला राइडिंग गियर्स। यस गाइस, राइडिंग गियर्स। अगर साइंटिफिकली, अगर प्रैक्टिकली अगर किसी ने मेरा लाइफ बचाई, दैट इज माय राइनॉक्स, that pant I was wearing, level 2 pant I was wearing. If it was that silver color 500,000 rupees knee guard that everybody wears to Ladakh even, if you know what I mean, that silver colored ones, trust me, मैं नहीं बस मैं I couldn't have survived the crash. मैं स्पॉट हो जाता, क्योंकि मेरा बाइक में जो डैमेज हुआ मेनली आफ्टर द इम्पैक्ट, मेरा लेग गार्ड जो है जाना का, that is extremely good, that did all the work, that took all the impact. वो घुस के लगा इंजन में। इंजन का केसिंग है, इंजन का केसिंग क्रैक नहीं हुआ, फट गया, लिटरली फट गया, बड़ा होल हो गया है, जस्ट इमेजिन। तो वो फट के पूरा ऑयल निकल आया। तो इम्पैक्ट के बाद उसके पीछे क्या था? मेरा पैर था ना, मतलब पहले लेग गार्ड, फिर मेरा आता है मेरा इंजन जो हिट किया, उसके पीछे मेरा पैर है। तो नेक्स्ट थिंग दैट गॉट हिट वाज माय लेग and the impact was unbelievably high. Trust me guys, I'm saying it's high, it was high. I know actually how it happened, no? So, and speeds and all, let's not talk about the speeds and all, at least not in camera. So anyways, impact was very high and the person who hit me, like even he tried to save at the last moment, but he was so close that he couldn't do anything. And वो impact मेरे पैर पे लगा and with that silver color knee guard, पैर कहाँ निकल के चला जाता भगवान जाने। सच बोल रहा हूँ मैं, अगर वो सब नी गार्ड पहनना है तो यार राइड्स मत करो। आप सिटी राइड्स में जा रहे हो चलो चलता है, बट आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो तो वो सब नी गार्ड्स बंद करो। आई नो पीपल हु गो फॉर लॉन्ग राइड्स वेयरिंग जस्ट विंड चीटर्स एंड वो एल्बो गार्ड पहन लेते 500 वाला एंड 500 वाला नी गार्ड एंड देन दे गो आउट फॉर अ राइड। गाइस, राइड्स पे मत जाओ, stop going out for rides, stop your rides, that's it. If you cannot afford proper safety, do not go, क्योंकि यार you have to come back in one piece, right? You have to be alive for your family. I've seen people in Gurudwanmar, they have taken their Apache, that's fine, but they're using a helmet which is of only 500 to 600 rupees helmet, roadside helmets. I've seen people wearing roadside helmets on Gurudwanmar rides. Can you imagine how dangerous is that? मतलब I don't know, राइड करना है तो फाइन, राइड करो लाइक अ राइडर, वेयर प्रॉपर गियर्स। आज अगर मैं जिंदा हूँ, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई गियर्स। I'll say this again and I'll say this my entire life. I owe my life to all these gears. They saved my life. So yes, do not do that guys. If you can't afford it, don't go. Just save your money up, get a proper gear, then go for a ride. मैंने हेलमेट भी जो एम्प्टी का मैंने बचाया, देख के आपको लगेगा भी नहीं कि क्रैश हुआ है, सिंपल बोल रहा हूँ, लगेगा भी नहीं, बट इट टुक ऑल दी लोड, मतलब पूरा इम्पैक्ट है पूरा यहाँ पे लगा था। फर्स्ट हिट जो लेग के लगने के बाद आई वाज फ्लाई करने के टाइम यहाँ पे लगा था। It was a very hard hit. I could feel almost a hot rod getting inside my head. It was so high. But when I opened my helmet, I was fine. Everybody was worried about my injury in my head, but I was doing very good. I have no problems till now. Scan bhi hua and everything is fine. And after that, all those people who were standing over there, it was almost by the time to 3:30 as I said. उसके बाद मुझे घर जाना है। पुलिस कॉप सेड अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हो, तो मैंने कहा नो मैन, आई डोंट वांट, आई वांट टू गो होम, आई वांट टू गो होम। आई वाज वेरी क्लियर कि गाड़ी से करके मैं बाइक को पुलिस स्टेशन में यहाँ पे नहीं रखूंगा या फिर शोरूम पे, मुझे दुर्गापुर लेके आना है मेरे बाइक को। आई वाज वेरी श्योर एंड एडमेंट अबाउट इट। कॉप्स बोल रहा है कि अगर आपको केस करना है, कुछ करना है, तो आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, आप यहाँ पे आपको बाइक को थाने पे ले जाना पड़ेगा, ये ऑल दोस ब्ला ब्ला बुलशिट। मीन सिंपल, आप समझ सकते हो व्हाट्स द प्लान। एंड आई सेड वाज सर, मैं ना खुद खाना है मुझे कुछ, ना कुछ खिलाना है, मुझे घर जाना है, अगर आप कर सकते हो तो। Then they said we can manage till Malda. I said no need, thank you. Then all the riders who were there, who came for my help, they arranged a bolero pickup for me and वो pickup पे मैंने अपना गाड़ी उठाया। मैंने नहीं, मतलब वो लोग उठा के दिया actually. And I thank them, I can't thank them enough guys. तो उठा के दिया and उसके बाद
सामान भी उठाया and the driver was very good Bolero driver. And then from there I left for Durgapur. It was almost 5:30 5:30 अराउंड दैट टाइम था. तो उसके बाद मैंने सोचा कि दर्द का क्या करूं. दर्द फिर से शुरू हो गया एंड द पेन वाज अनबेरेबल. एंड दैट वाज अ मोमेंट नो आई वाज स्टार्टिंग रियलाइजिंग कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है. एंड आई वाज वेरी स्केर्ड कि हाउ माय फैमिली वुड रिएक्ट. वो लोग क्या करेंगे, तो मम्मी पागल हो जाएंगी, मेरे पापा क्या बोलने. आई वाज वेरी स्केर्ड. एंड उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग द आई वाज लुकिंग एट द बैक, क्योंकि बोलेरो पिकअप विंडो होता है तो बैक में मेरा बाइक दिख रहा था. एंड वो देख के I was crying like anything. I was crying like hell. I was crying up. I couldn't take it actually. मतलब I can't take it कि क्या हो रहा है मेरे साथ. That's my baby whom for which I gave everything. I save. I'm not rich guy, guys. I'm saying again and again. I save and I save up and I do everything. तो उसको ऐसा हालत में देख के I was completely shattered and the pain was increasing continuously every moment. And mind it, my house was almost 450 kilometers away, 400 to 450 kilometers away. Then the cops, they started catching us at every 100 kilometers. कि कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो, बाइक पीछे का किसका है, कौन किसका सामान है. हम saying सर मेरा एक्सीडेंट हुआ है and I'm going back home. And आर यू ड्रंक, क्या ड्रिंक पी रहे हो, क्या दारू पी के हो कि नहीं, लाइसेंस दिखाओ. अरे मैं बोल रहा हूँ मेरा गाड़ी पीछे है, आप देख लो. एंड दे वर ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एंड आई वाज एडमेंट आई वोंट पे देम सिंगल रुपी बिकॉज आई हैड एन एक्सीडेंट एंड आई एम गोइंग बैक होम एंड दिस इज नॉट अ क्राइम. Guys, mind it, when you are in situations like this, do not break down to all these such people on the roads. They will try to extract money from you, they will try, be it cops, be it anybody. Do not pay them a penny unless and until आपको गलती हो. आपको गलती होगा तो आप निकलने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन otherwise I know I was not at fault. क्रैश होगी, इवन एट द एक्सीडेंट स्पॉट भी मैंने बोला मेरा गलती नहीं था, मुझे मारा गया, मुझे हिट किया गया, आप उसको पकड़ के लाओ. यू टॉक टू देम, डू नॉट say me anything. I am not the one responsible for this crash and मुझे harass मत कीजिए. And I was very adamant about it. And because I was adamant, and thankfully that did work out. So the cops didn't harass me much in that accident location. And रास्ते में तो 3 बार ऐसा हुआ. People started asking me. I was like, हाँ accident हुआ है, all these things. Somehow I came. Then around 11 o'clock I reached Rampurhat type. 10 o'clock maybe. Rampurhat, वहाँ पे जॉय था, मतलब ओरिजीत, admin of robot throttlers, and boy this dude, he helped me like anything. मैंने खाना भी कुछ नहीं खाया था, मतलब if you can remember एक्सीडेंट हुआ था 12 बजे दोपहर को, 10-11 बज के मैंने कुछ नहीं खाया. घर पे भी किसी को नहीं मालूम अभी तक. I'm saying them, yes I am in my hotel. तो जॉय ने, और या फिर ओरिजीत, एक ही इंसान है एक्चुअली, तो हम लोग प्यार से जॉय बुलाते हैं. तो जॉय ने मुझे कुछ बिस्किट कॉफी दिया. खाना तो नहीं खाया जा रहा मेरे से. उस टाइम पापा का फोन आ रहा है कि बेटा कहाँ पे तू. मैंने बोला मैं तो होटल में हूँ. कहाँ पे? मैंने बोला मैं नेपाल बॉर्डर में हूँ. देन ही इज आस्किंग क्या हुआ तेरे साथ. कुछ नहीं हुआ. इट्स लाइक मैं तेरा बाप हूँ, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है. एंड आई वाज शॉक्ड. मैंने बोला आपको कैसे पता चला. ही सेड द मेन थिंग इज कहाँ पे तू और मुझे कहाँ पे आना है. तो आई सेड कि मैं ऑलरेडी रामपुरहाट आ चुका हूँ, 3-4 घंटे में घर पहुँच जाऊँगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बाइक को मैं पहले शोरूम पे ड्रॉप करूँगा, उसके बाद मैं घर आऊँगा, तो आप लोग शोरूम पे आ जाइए राउंड अबाउट एट 2 o'clock. एंड इवन द गाइज इन दुर्गापुर सर्विस सेंटर लाइक बाबू, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल नेम इज बापुन भैया, he is manager of sales, and Arindam भैया from service head. So these two people, they were there with me at night 2:30 to unload the bike from the truck. So thank you both of you once again, and thank you RH Automobiles for understanding. That's it. So they came along, and जब मैं पहुंचा it was 2:35 around, और मैंने देखा मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे दीदी का लड़का, and I could not contain myself. I started like this was the first time maybe after ages कि मेरे मम्मी को हक करके इतना रोया मैं. मतलब I could not like, ये जो रास्ते में जो दर्द हो रहा था ना, it was so much I thought I will be passing out. It was so much unbelievable.
and because by that time already my PCL ligament is already उखड़ गया bone के साथ. So you can well understand how serious was that. Broken bone होता तो अलग होता, ये तो और भी serious हो गया था. तो मेरे मम्मी को और पापा को I hugged them and I cried and cried, and like I could not contain myself. Yes, finally I could see them, because I'm sorry for that, whatever is going outside. Anyways, so I broke down. Then I came down of the car because I had to see my bike, and after that the moment happened came when the bike was to be unloaded. So आप लोग देख सकते हो अभी कि बाइक अनलोड हो रहा है, एंड माई मदर इज स्टिल देयर. मेरे दीदी का लड़का है ओरिजित, इसका नाम भी ओरिजित है. सो ही वाज देयर विथ मी ऑल लॉन्ग आफ्टर दैट. सो वो बाइक अनलोड हुआ. वो बाइक देख के ना अगेन जो फिर से बाइक देख के, मैंने एक्चुअली मम्मी डर गई थी थोड़ा कि क्रैश तो बहुत भयानक हुआ है, लेकिन फिर भी शी वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू बी विथ मी एंड सपोर्ट मी कि कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, यू आर फाइन, यू आर अलाइव, यू आर फाइन, पैर ठीक हो जाएगा, डोंट वरी. सो बाइक अनलोड हुआ एंड आई हैंडेड ओवर माई बाइक टू देम. एंड रात में घर आया अराउंड अबाउट 3:30 के अराउंड घर आया. दैट वाज द टाइम आई रियलाइज लाइक दिस इज हेवन फॉर मी. Like at the moment of the accident, thinking that I'm dead, I'm searching for my body when I got up. Trust me, dude, I was searching for my body. I died. Where is my body? And I see I'm alive, because only I know in this world what happened and how it happened. And people say they forget, but I remember most of it. कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, and how I was hit. Actually, I was hit. I did not hit anybody. I was hit, and that's the truth. Many people are saying I was riding at 200 and what nonsense they're making up stories, and बाजार में बहुत सारे stories चल रही है. So I'm clearing that off. Nothing, ऐसा कुछ नहीं हुआ. But मुझे मारा गया था. I was hit. That was the complete point. Speeds and everything कैसे हुआ वो अभी नहीं, बाद में. But I was hit. And वो जो moment की वो जो when I was turning, rolling around the highways and getting hit here and there, and I could see the sky, the road, the sky there, the road at very high speed, and I'm trying to hold brace myself up like this, and ऐसा लग रहा था कि ये कभी बंद नहीं होगा, ये रोलिंग कभी लाइफ में बंद नहीं होगा. दिस हाउ आई डाई. उस मोमेंट से अपने घर आना एंड ऑल द टेंशन, वो 12 बजे से रात 3:30 बज गया था. 16 hours of almost mental trauma. तो घर पे आने के बाद that happiness कि yes, I am with my family now, they'll take care of me. My body gave up. And पहले तो मेरे पापा ने पूरा इंस्पेक्ट किया मेरा क्या क्या हुआ है प्रॉब्लम्स. लेग में प्रॉब्लम था, बाकी माई फीट मतलब जो फिंगर से सिर्फ ठीक है, हाथ पैर एकदम सब ठीक है. यहाँ पे बहुत पेन शुरू हो गया था ऑलमोस्ट मेरा तब से. अभी भी हल्का से है, बट आई एम डूइंग गुड विद दैट. So now getting up the stairs was a huge challenge. That was the time when I passed off. मेरे बॉडी में इतना हीट हो गया था, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट इतना बढ़ गया था कि I passed off almost like an attack. And I opened my eyes just after half an hour later on my bed, and my parents were there. They were continuously giving water on me, and even my mom crying. And वो देख के ना जब मैं I got my consciousness back and I got up and see my mom crying like that for me, and my dad even he's controlling himself. I can see him in tears, but he's controlling himself. My elder sister, even she's almost on the verge of breaking down, but still keeping herself strong for me. मेरा भांजा टुबाई, he was like continuously patting my chest, my back, trying to give me water. उन लोगों का वो जो फेस देखा ना, 5 लोगों का फेस मैंने देखा ना उस टाइम, I truly felt blessed कि I have people who loves me so much. Yes, I know there are people even after the 1 month of the crash that didn't even call me. I don't care, I don't mind. I have these people in my life who love me so much. और वो moment पे when I regained consciousness at my home, it was around about 4:30. And another point, टुबाई जो कि मेरा भांजा है, next day was his last board exams. 12th का board exam था, morning 9 o'clock, and at 4:30 a.m. he is with me, helping me out. Can you imagine his love towards me? And वो सब देख के I just hugged them, everybody together, and I started crying. I cried my voices out that day. And I said them sorry.
I said them, I'm still saying them sorry for everything because all this trouble you have to go for me. I am sorry. I really am sorry. But they consoled me कि ओके सब ठीक हो जाएगा, बट ब्लैकबेरी नहीं थी मेरे पास। और दिस और ये जो जब भी दिमाग में मेरा आ रहा है ना कि ब्लैकबेरी अभी इस हालत में है, शी इज नॉट, आई नो ठीक हो जाएगी, बट दैट पिक्चर ऑफ हर लाइंग ऑन द ग्राउंड ऑलमोस्ट डेड, it was killing me and still killing me from inside. I know it is killing me, but all I can say is thank you for all the love, all the support, for all the calls, the messages, for everything all of you have done for me. Like आप लोगों की दुआ के बिना मैं शायद आपके सामने ऐसे बैठ के बात नहीं कर रहा होता। आज बहुत 1 महीने बाद मैं खुल के बात कर रहा हूँ कैमरा के सामने। इवन मैंने फैमिली को भी ये सब ऐसे करके शेयर नहीं किया, किसी को नहीं शेयर किया। तो आई नो कैमरा के पीछे आप लोग सब हो जो देख रहे हो ये सब। सो दैट्स माई स्टोरी गाइज। एंड इन 1 महीनों में मैंने एक चीज समझ लिया, कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, कौन मुझसे प्यार करता है कौन दिखावा करता है, बहुत कुछ समझ में आ गया। पर नेगेटिव्स को मारो गोली। I have few people in my life who loves me like anything, and उसके लिए I have to come back hard, come back fucking strong. Yes, I know I can't walk now. मैं अभी चल नहीं सकता, and it is killing me and everybody in my family as well. They are going through the trauma as well. Seeing me, even going to a washroom is a challenge for me. Hospital में operation के बाद, surgery के बाद, I know how tough it was even for going to washroom, even for peeing it's a normal everyday work for everyone, but it was a challenge for me how to get to the washroom. So I have started to appreciate every small things in life. I never appreciated that. पहले कभी नहीं करते थे हम लोग ना। Even I'm thankful कि I can breathe. I'm alive because ये जो वीडियो इतना बड़ा हो रहा है इस टाइम में पता नहीं कितना लोगों का डेथ हो गया होगा ऑलरेडी इस कंट्री में, इस वर्ल्ड में। But I am alive. I made through, and I'm thankful, and I'm so happy. I'm thankful to God. I'm thankful to the universe, to everybody, for this new life. 30th March. That's my new birthday, guys. I got a new life. I fucking got a new life because nobody could have made it through. Nobody could have made it through. I know what happened actually, and without सबका प्यार ये नहीं पॉसिबल होता। I'm sorry, I'm getting bit emotional because ये सब बातें मैंने किसी को इतना नहीं बोला है, मैंने शेयर नहीं किया। और सॉरी और एक बात के लिए कि बहुत बोरिंग हो गया शायद वीडियो, बहुत लंबा हो गया वीडियो, बट आई नीडेड टू शेयर दिस स्टोरी विथ यू ऑल। एंड राइट नाउ मेरा कंडीशन ये है कि फिजियोथेरेपी चल रही है एंड आई एम नॉट एबल टू वॉक, बट विथ टाइम आई एम श्योर आई विल एंड विल कम बैक स्ट्रॉन्ग एज एवर गाइज। ब्लैकबेरी अभी और जीटी, या फिर मेरी जीटी कुछ भी बोल लो, वो अभी सर्विस में क्लेम्स हो चुकी है, पास हो गया, अभी पार्ट्स ऑन दी वे, तो वो भी शायद 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। इवन शी विल बी बैक एंड उसको तो वापस लाना ही है, वॉट एवर, आई डोंट केयर, शी हैज टू बी बैक विथ मी। It's killing me inside. This is killing me inside. That she is not there with me. It is killing me inside. Frankly speaking, that's the only love I have in my life, except my family. So it is killing me from here. So that has to be back. I have to come back stronger. I have to come back harder. Rides भी होगा, but पहले मुझे ठीक से अपने पैरों पे खड़ा होना है। I need to start walking again, learn to walk again, learn to run with you all, and yes, that's my story. एंड बोरिंग हो गया, अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो माफ़ी, सॉरी, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई नो मैंने बहुत बहुत थैंक यू बोल दिया, बट येस आई एम थैंकफुल फॉर दिस न्यू लाइफ। एंड यस, मिलेंगे किसी ऐसे एक वीडियो में, शायद राइड तो नहीं हो पाएगा या फिर रिव्यू भी नहीं होगा बाइक का, लेकिन वीडियोस में कुछ अच्छे वीडियोस में ज़रूर मिलेंगे बहुत जल्दी। एंड गियर्स के बारे में भी बहुत कुछ बात करनी है, बहुत कुछ मैंने सीखा इसके बाद 1 महीने में। I'll say you everything about all these things in details, and till then, like guys, if you're riding, please wear gears, wear full gears. Do not wear all those 500 rupees elbow guards and knee guards. Do not wear that, I request you, and save your heads with proper helmet, with proper branded helmets. Do not go for cheaper ones. I've seen people in Gurudwarma wearing 500 to 600 rupees cheap, dirty, cheap helmets on the road trip to Gurudwarma even. I don't know how they can risk their life like that. अगर आज मैं जिंदा हूँ तो only for gears.
So that's it for this video guys. ये था मेरा story post crash and let me know guys कि आप लोग का व्यूज क्या है अबाउट इट. कमेंट डाउन बिलो and I will see you in some other videos and देखते हैं क्या videos होना है इसके बाद because my head is not in that frame of mind right now to make videos, but keep supporting, keep loving as usual and वीडियो को अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने शेयर की इस वीडियो पे. एंड यस बिफोर एंडिंग एज आई ऑलवेज से, बाय द वे एंडिंग से पहले इफ यू हैव नोटिस दिस इट्स अ न्यू लोगो ऑफ ऑटोमेनिया एंड अगर आप ऊपर देख सकते हो यहाँ भी एक ऑटोमेनिया का नया लोगो आ गया है. सो आई होप यू लाइक इट. अगर अच्छा लगे तो लेट मी नो. So yes, before ending, as I always say, wear your helmets when you're riding, wear your full gears when you're going for longer rides, for sure guys, do not miss that. And wear your seat belts while driving and never drink and drive. Never ever drink and drive or ride. This is Pushpa Manager, you're watching Automania signing off. And this was my story. Ta-da.